Good morning, students. Next topic of your class 11 is complement of the set. What is definition? Let U be the universal set and A is as a subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. Let U be the universal set. U की एक universal set in which all elements are contained. जिसमें भी सारे elements होंगे, ठीक है? And A as a subset of U. A की और एक subset है, जिसमें भी कुछ element exist करने के, ठीक है? सारे भी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? Then the complement of A is the set of all element of U. फिर उस A का complement की होगा all element of U. U के सारे element किन्हों छट के which are not the element of A. ਜਿਹੜੇ उस A set ਦੇ ਵਿੱਚ exist नहीं करने. For example, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? In which there are 700 students. तो ਜਿਹੜੇ 700 students ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? Universal set. That is our universal set. And you are studying in class 11. और ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੈਟ A. ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ A. ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹੋਲ ਸਕੂਲ. ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ वो की ने ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ 600 ਚੋਂ 50 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਓਕੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ. ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਐਜ਼ A ਡੈਸ਼. ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਐਜ਼ A ਡੈਸ਼. ਕਲੀਅਰ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ. ਓਕੇ, ਫॉर एग्जांपल U is our universal set in which there are 5 elements. 5 numbers ने या elements कह लो 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And A is a subset of U in which there are 2 elements 1 and 3. A U का की है subset है. Okay. Symbol की subset है this one. This is the symbol of subset. Okay. A is subset of U. Then what is the complement of A? फिर उस A का complement क्या होगा? चेक करो जो A सेट के विच एलिमेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सल आ रहे हैं 1 क्लियर 3 हम चेक करो कि A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे बट ਜਿਹੜੇ यूनिवर्सल ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. ठीक है? 2 4 and 5 2 4 and 5. So complement of A is 2 4 and 5. So this is your complement of the set. Okay students, now see next example number 22. Let U is the universal set in which there are 6 elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and there are 2 sets A and B. In A there are 2 elements 2 and 3 and in B set there are 3 elements 3, 4 and 5. We have to find what? Find A complement, B complement, A complement intersection B complement and A union B. Okay? First we have to find A complement. तो चेक करो A ਦੇ ਵਿੱਚ 2 एलिमेंट्स ਨੇ which one 2 and 3 2 and 3 ਸਭ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 1 4 next 5 and last one 6. So complement of A is 1 4 5 and 6. Okay students? Next B complements. In B sets there are 3 elements 3, 4 and 5. So check करो कि केड़े B ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आ रहे but कोई यूनिवर्सल ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ.
3 4 5 3 4 5 तो कितने बच गए अपने को 1 2 and 6 so complement of B is 1 2 and 6 next we have to find A complement intersection B complement A complement so A complement elements करेंगे 1 4 5 and 6 this is the sign of intersection intersection means you have to find the common elements okay तो सी common elements find करने हैं next B complements 1 2 and 6 1 2 and 6 तो चेक करो दोनों सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं 1 है ना यस नेक्स्ट 4 नो 5 नो 6 yes 6 is also common in both these sets okay so 1 and 6 is the intersection of A complement and B complement okay students now next A union B what is union union means you have to write all the elements in both sets but having common element written only one time so see common elements को सिर्फ एक बार लिखना okay A sets check करो A sets के elements कितने 2 3 and B के कितने 3 4 and 5 common क्या डालते हैं 3 is the common element okay so write 2 3 is common in both elements you have to written it only one time तो सिर्फ common को एक बार ही लिखोगे only one time 3 next 4 next 5 so 2 3 4 and 5 is the union of A and B set okay next hence show that A union B complement is equal to A complement intersection B complement what is the next part of this question we have to show that A union B complement is equal to A complement intersection B complement you have to prove left hand side and right hand side okay तो से left hand side और right hand side को equal proof करते हैं okay first left hand side A union B check करो कि A union B से find कर चुके हैं okay केड़े एलिमेंट्स ने A union B से 2 3 4 and 5 2 3 4 and 5 are the elements of A union B now we have to find the complement of this A union B तो see this A union B the complement find करोगे तो complement check करो 2 3 4 and 5 में लिख करो 2 3 4 and 5 elements कितने बच गए 1 and 6 तो ये आपका 1 and 6 so this is our left hand side now we have to find the right hand side A in complement intersection B complement ABC find कर चुके हैं यदि वैल्यू कितनी है इसकी 1 and 6 1 and 6 तो चेक करो 1 6 1 6 इक्वल आ गए तो नहीं यस ठीक है इस प्रॉपर्टी को से कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ इट इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू